good evening, ladies and gentlemen. As we run into the last few hours of the 7th LitFest of Vasant Vihar, we are experiencing a great panel of experts and motivators who have come here over the day and entertained us and made us more knowledgeable. Now we are going to have a very high-powered discussion, and I see all the industry bigwigs, the people who are the who's who of the automobile industry here, my friends and my colleagues. So, the session for today is basically on the electric vehicles. As we all know, electric vehicles is what is the talk today and what is happening. But there are sort of challenges when we move into the electric vehicle segment. There are going to be many challenges on the cost. There's going to be challenges on the rechargeable batteries. There's going to be challenges on how and the distance that can be covered by any vehicle on a single charge. Now, the safety of electric vehicles is also going to be a very big challenge. So let us hear from the experts. Can I now invite the experts to come on the stage, please? We have today with us the who's who of auto industry. We have Nand Kumar Nair, who is also the moderator. Shashank Srivastav. We have Gaurav Gupta, Hardeep Barar, Jyoti Malhotra, Anand Prakash, and of course, Anuj Gulani. So I leave the stage and let the experts tell you a lot about the electric vehicles. What is the future going to be? Over to you, sir. Nand Kumar ji. Thank you very much. Hello. Yeah. Would you like to come here and do it? As you like, wherever you're comfortable. Thank you very much, sir. As you said, this is the whole automotive industry right now sitting here. शुक्रगुजार हूँ पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जिन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को यहाँ लाके खड़ा कर दिया. Sorry for the interruption. Before we start, a loud round of applause for the people here on the stage. So my apologies, I should have done that before you start. Please. So शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया के इस वक्त ऑटोमोटिव लैंडस्केप को अगर कोई इस वक्त डिकोड कर सकता है तो वो ये 6 नाम हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन सभी की अपनी अपनी एक बहुत ही उम्दा मौजूदगी है इस इंडस्ट्री में. शशांक सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और उर्दू में शशांक सर का हाथ जो है वो बहुत ही अच्छा है. First, let me introduce our high-powered panel that is sitting here with us right now. I'll start from my right, Mr. Anuj Gulani, who is a friend as well as founder and CEO for WAF Group, which is one of the leading automotive committee that holds n number of seminars and give proper direction to the things that are happening in the industry. On his right is Mr. Gaurav Gupta, Chief Commercial Officer, MG Motor India, who is a little tense now because he is getting prepared for his new EV, that is Comet, which is coming soon. So not tense, excited. Excited, I am so sorry. Excited. Yeah. On his right is Mr. Shashank Srivastav, one of the leading speaker, one of the most heard name in automotive industry, ED Maruti Suzuki India. Shashank sir, thank you very much for joining us.
And on right, Shashank sir's right is Mr. Hardeep S. Barar. He is the Vice President for Kia India. वो कंपनी जिसने पिछले 3 साल में पूरे कंपटीशन को बहुत परेशान किया. The way that they have gone. I'm personally a fan of his, not because of his caste, because of the way that he has been promoting fitness. Marathon, yes. Hardeep, so thanks a lot for your time. ये 3 मास मार्केट के प्लेयर हैं जिन पर बहुत कुछ दारोमदार रहता है, और 2 लग्जरी कार मार्केट के नुमाइंदे भी साथ में मौजूद हैं. हमारे साथ इस वक्त ज्योति मल्होत्रा जी है, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर वॉल्वो कार इंडिया. थैंक यू ज्योति सर फॉर जॉइनिंग अस. एंड आनंद प्रकाश जी, को फाउंडर BMW इन्फिनिटी कार्स दिल्ली. मर्सिडीज़ को अच्छा कंपटीशन देते हुए BMW और मर्सिडीज़ में पहले और दूसरे की लड़ाई चल रही है, और आपका रोल लगातार बढ़ता जा रहा है. विल हैव अ प्रॉपर. इसमें एक और ऐड करो. He has done what most aspire to do. From being an employee, he became an entrepreneur. Congratulations So on that that. is the head part. इस वक्त the whole industry, or rather the whole country is focused on one thing, and that is EV. And that is the topic of our discussion, that is mainstreaming of electric vehicles and green mobility in India. I will start with Shashank sir. Shashank sir, EV adoption, loads and loads of questions are raised, but I'll start with a very simple and straight question. Is India now ready for EV? I think we are getting there, but we are not yet ready. And that is reflected in the fact that out of the 30,70,000 vehicles, passenger vehicles which were sold last year, just 21,000 were EVs. And this year, expected sale of about 50,000 in an industry of about 39 lakhs. Still very far from a big adoption. But remember, the adoption curve for EVs will differ across different categories. So 2-wheeler and 3-wheeler, it's already quite high. It's whereas for 4-wheeler, is last year it was less than 1%. And I think there are 2 major constraints as we have been discussing. One is the cost of the vehicle itself, the cost of acquisition, and second is the charging infrastructure, which in our country seems to be not so well developed. But the expectation is that this 1% of today will become about 3% in 24-25. That's 2 years from now. And by 2030, it would be about 17 to 20%. That's roughly 1 million cars in 2030, and on a cumulative basis, about 4 million cars from today till 2030. Gaurav sir, as Shashank ji said, ki affordability is a big issue. That is the biggest challenge that industry is also facing. Now, how to make EVs affordable? क्योंकि आपकी 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं, तीसरी गाड़ी का तैयारी पूरी हो चुकी है, और कॉमेट का तो बॉडी शेप भी ऐसा है जो कि लोगों को पसंद भी आएगा और उसमें 2 राय भी रह सकती है. तो इन दैट केस, हाउ डू यू प्लान टू मेक EV अफोर्डेबल टू एवरीबडी? So there are 2 aspects to this. Firstly, the story of EV has to be well understood by the customers and by all of us as stakeholders. So whether it's manufacturers, whether it is the infrastructure players, all the stakeholders have to come together to understand, and most important for the customer. I'll give you a simple maths. Shashank ji rightly said, initially the car looks expensive, but the running cost of this car is very, very economical. So look, take an example. अगर आप महीने का चलाते हैं 1500 किलोमीटर, let's say. So roughly in a year you're driving 20,000 kilometers. If you take even a 10 to 12 mileage for the car, you're talking about, about 1,500 liters of petrol, put it into 100 rupees cost. So 15 to 18,000 rupees is your just pure running cost, right? Number one. Number two, I'm making a mistake. I think it's 1.6 lakhs, my mistake, yeah. And then if you look at the EV cost of running for 15,000 kilometers for your full year, your cost will be only about 1 rupee per kilometer. So many times people are seeing the initial cost and they are trying to say कि ये तो बहुत महंगी पड़ती है,
But if you are seeing actually your running cost of the car, and if you're taking a financing on that car, you're paying EMI plus you're paying petrol and diesel. The amount you're paying for petrol and diesel every year actually is more, and it'll keep increasing. So when you see the full maths, in 3 to 5 years, actually an EV becomes a much more economical and a much more viable option and better than an ICE vehicle. Second, we are seeing the adoption of EV actually becoming very, very fast. Adding to the numbers that we just shared, you know, in the passenger car sector, we are seeing that multiple of almost 4 to 5 times every month we are seeing the movement. So I'm slightly more bullish than colleague Sashank. I'm looking at probably 5 to 8% by 2025. The reason for that is, right now there are very few models in the market. So जब आपके पास models कम हैं choice के लिए, so customers are limited either with a car which is, let's say, at 15 lakhs or 25 lakhs. But the moment you have more choices in the market, that is when the industry will grow much, much more faster. You can choose. And one big myth which people talk about is कि public charging की कमी है. Actually, worldwide we have seen home charging is more than enough. 80 to 90% of your requirements is covered purely by home charging. So you will get used to it like a mobile phone where you have a daily charge also. So I'm taking a bit longer to explain this, but don't mind, because the audience also is, I like to just share this. If a car has got a range of 300 kilometers or 350 kilometers or 400 kilometers, and you're charging it once, you are not doing that many kilometers every day. So you still have, let's say, half a tank of petrol equivalent. Similarly, in ICE vehicle, in the EV, you have the battery charge available to you. So you will be charging it twice or thrice a week based on your requirement. So you don't have to really look at public infrastructure on a regular basis. But yes, the confidence that will need to be having in our customers, that there should be a provision of public chargers. And today I'll give you some more numbers. If you look at the charging infrastructure of India, it's actually growing much more faster than the cars on the road in India. If you look at players like BPCL or some of the other players in the private sector also, they are telling us that the usage of the charging that they have put up is less than 3%. So there is potential there to utilize. There is education for customers to know that your home charging every day is good enough. And you are growing even on highways. Today I have driven my own ZS EV, Delhi, Jaipur, with a family, with AC on, no problem. I have done Delhi, Amritsar, no problem. People have done Pan India. So it is gradually what is happening is like Hardeep, for example, is a runner. There's a running club. You know, they'll talk about which track to run, what is the speed. So the moment you're coming into the EV ownership, you will automatically people will share with you where the charging infrastructure is. The charging maps are there on the car screen, on your mobile screen. It's all about taking the plunge into the EV system. That's why I see. फैंटास्टिक. हरदीप सर, गौरव जी ने जैसे कि अभी कहा कि इकोसिस्टम की एक ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज जो है वो कम हो रहा है, लेकिन you think that there is some sort of incentive is also required, support is also required from government side, or the industry is all ready and they can take the challenge on their own? देखिए, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है अगर आती है तो हमेशा बेनिफिट होता है. गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव है फ़ायदा होता है. बट मैं गौरव की बात पे जा रहा हूँ वापस कि 80 से 90% लोग जो हैं वो अगर होम चार्जिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं. तो जो हम रेंज एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो रेंज एंग्जाइटी अब क्या हो रहा है कि पहले जो गाड़ियों का चार्ज था वो 100 से 200 किलोमीटर तक था और 250 किलोमीटर तक था जब लोगों को रेंज एंग्जाइटी हो रही थी. लेकिन अगर आप रिसेंटली जो देखोगे, जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 250, 300, 350. हमने जो EV6 लॉन्च करा था उसका रेंज है 528 किलोमीटर. और जैसे गौरव ने बोला कि अगर रेंज इतनी अच्छी है, अगर आपको यहाँ से अमृतसर या जयपुर भी जाना है तो 528 किलोमीटर, मेरे ख्याल से भारत में कोई 500 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलाता है. तो अगर 500 किलोमीटर आपकी रेंज है और जो धीरे धीरे बाकी मास मार्केट गाड़ियाँ भी वो भी 300 प्लस पे जा रही है. और अगर हमने देखा कि अगर आज से 10 साल पहले हमारी जो नोकिया या 15 साल पहले नोकिया की बैटरी थी वो निकाल के आप फिर चार्ज करते थे और ख़त्म हो जाती थी, आज के दिन में जो चार्जिंग है, उस जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. जिसके कारण मेरे ख्याल से जब जैसे जैसे बैटरी कैपेसिटी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी, ये जो रेंज एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी. और
और जो 80 से 90% लोग वैसे भी होम चार्ज करते हैं, अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं, अगर आप मान लो 100 किलोमीटर भी अप एंड डाउन करते हैं डेली और शाम को आके आप अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा देते हो, तो एटलीस्ट जो सिटी वाला कस्टमर हो तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए इस केस में। सिर्फ जो बाहर जा रहे हैं कस्टमर, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, 500-400 किलोमीटर चला रहे हैं, उसके लिए जो हाईवे चार्जेस हैं, और उसमें कंपनीज़ ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है और कंपनियों ने भी और भारत सरकार ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से अगर हम दिनों को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और जो कमिंग टू योर पॉइंट कि सब्सिडी चाहिए, येस डेफिनेटली, अगर किसी तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो सब चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम CPO बोलते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन दोनों को थोड़ी और एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो और थोड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए। I'm sorry, I'm interrupt. I want to add to what Hardeep said. I think सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। अगर आप ऐड करते हो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स, प्लस अभी रिसेंटली 2 साल हो गए ऑलरेडी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है सरकार की, टू बी एबल टू मेक द बैटरी एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी विद इन इंडिया। सो बैटरी के अंदर सेल की मैन्युफैक्चरिंग अभी वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड है, कुछ ही कंपनीज़ में और कुछ ही कंट्रीज़ के पास है। टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स इन दिस एरिया इज़ अ बिग स्टेप। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि आज के दिन में ज़ीरो RTO चार्ज, दिल्ली में हम जहाँ हैं अभी, दिल्ली में ज़ीरो RTO फीस है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो देयर आर लॉट ऑफ सच इंसेंटिव विच आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड आई थिंक ऑल दिस एडिंग टुगेदर विल कीप द मोमेंटम गोइंग अप। ज्योति जी, इफ़ आई एम क्लियर, मास मार्केट और लग्जरी कार मार्केट दोनों की समस्याएं अलग अलग है। वहाँ पर पैसा काफ़ी है, गाड़ियाँ कम है, सप्लाई की दिक्कत रहती है। लग्जरी कार मार्केट में EV एडॉप्शन की अगर बात करेंगे तो पिछले 2 सालों में ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, CBU CKD हर तरीके से कंपनीज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू स्टिल थिंक? Is that the awareness or is that the supply chain network that you need to get in place? So I think first thing, as Shashank said in the very beginning, adoption in different categories for EVs are going to be coming at a different pace. And our early understanding is that adoption in luxury cars will be much faster. And the reasons are many. Obviously starting with the, I think there's a good discussion around, let's say, range. And if the range is 400, 500, 600 kilometers, that sort of a range, then I think home charging, as been discussed here, takes care of. I am using a car, I stay in Delhi, I go to Gurgaon every day, and I think exactly what just Gaurav said, on a day I don't need to I can charge 3 times in a week, that's good enough for me. I don't need to do that, and if I have been to Chandigarh and down without facing any problem of any charging. So I think the challenge is, first, you're right, is this conception. Now the way adoption will happen is, and I think that has to start from somewhere, right? So we are seeing a lot of green plate cars already on the road. Government has its support. As somebody in your own circle buys one car, the message then spreads. People come and ask you कि अच्छा आपकी गाड़ी आपने ले ली, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैं when I go around, people ask me this question. They don't know who I am, but I think they ask this question. And I'm sure जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं उनसे लोग ये पूछते होंगे पक्का, तो उससे एक चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होती हैं. एंड ऑन द अदर साइड अगर आप देखो, इवन 2 व्हीलर्स में अडॉप्शन इज़ बिकमिंग वेरी फास्ट. सो अगर फैमिली में एक टीनेजर बच्चा और या कोई somebody buys a EV scooter or a 2-wheeler, suddenly this person, the kid is able to solve the problem of range. 70-80 किलोमीटर में भी कुछ ना कुछ करके he is able to move around and get the charging done and have his mobility done, and with the economics which Gaurav spoke about, and that economics applies for everyone. So I think adoption will happen at a much faster pace than we, I think, foresee. India is a country of solutions. I don't want to use the word jugaad, but solutions. So when mobiles came first in India, everybody had these questions कि यहाँ पे टावर कैसे लगेंगे, सिग्नल कैसे आएंगे. I think the same is true about the charging infrastructure. It is coming up, and it will come up at faster pace than we can even imagine. Every day you hear, I think, some new charging infrastructure coming in different forms and shapes, and it is increasing by the day. The other anxiety which we hear out from the customer is कि गाड़ी तो ले ली, चलो शुरू में प्राइस भी दे दिया, क्योंकि इट्स अ न्यू एनिमल. सो पीपल नो कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इसकी बैटरी का क्या होगा. दीज आर द क्वेश्चंस which keep coming. So I think most of the manufacturers are now giving warranty of about 8 years on battery,
to take away this anxiety. And that is the moment customer realizes this की 8 साल की warranty है, I think people are, I think, more or less sorted कि okay, I think this means that I can go ahead and buy a car now. So I think these things, if you put together, means that, and obviously I think from government side, lot of supports which Gaurav spoke about are there. But what we really need is continuity. We don't want surprises. That I think is the most important thing. Suddenly, you know, in India, overnight, new decisions can be taken, and I think clarity is required. Right now, I think as I think Delhi, many states have a support on even road tax. I think मैंने अभी आज दोपहर को ही देखा, even UP has now announced road tax relief on EVs, and I think more state governments are coming forward and I think coming with new EV policies. So that will definitely help adoption of electric cars. हमारा, I can tell you my experience, we offer XC40 recharge in electric as well as XC40 in ICE. And after the launch, I think we are seeing a complete shift. People want to buy EVs. I think we are now contemplating, should we sort of move completely producing and selling EVs as far as that segment is concerned. So adoption is at that level. And I think globally we are saying Volvo is committed that by 2025 we want to sell 50% battery electric vehicles. And I think in India that will move even faster. That's where I say. Thanks. आनंद सर, अब आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, आपको ज़्यादा आइडिया है लग्जरी कार मार्केट में. जब कोई गाड़ी लेने के लिए निकलता है तो क्या अभी भी चैलेंज है आइस और इलेक्ट्रिक को लेके, एंड डू यू फ्रॉम योर साइड ट्राई कन्विंस फॉर ग्रीन मोबिलिटी? अगर मैं एक नाउ बीइंग ऑन द अदर साइड एज अ डीलर, बिकॉज वी इंटरेक्ट लॉट विद कस्टमर्स, अगर मैं पूरे सम अप करूँ विच ऑल माई कोलीग्स हैव टॉक्ड, 4 hours में 4 hours I can sum up the whole thing, the challenge which we are facing and also the solution lies in this. And the first and most important is reach. रीच की जब मैं बात करूँ तो क्या कस्टमर खरीद पाएगा उस गाड़ी को. और सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर एक नॉर्मल वैगन आर 5 या 7 लाख की है, अगर उसी के अंदर इलेक्ट्रिक अगर वो 9 लाख की आएगी या 10 लाख की आएगी, तो उसके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मनी. तो आई थिंक समवेयर चैलेंज इज टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी एट द सिमिलर प्राइस. उदाहरण के लिए बात करूँ iX विच इज़ BMW इलेक्ट्रिक फुली इलेक्ट्रिक कार ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ X5 और iX की ऑन रोड प्राइस बिल्कुल सेम है. एंड एज अ रिजल्ट customers do not shy away buying an iX, and I'm sure similar the story in Volvo. So in mass car or in the luxury, the pricing is almost similar. आप 7 series और i7 करेंगे, similar price है on road price. So you do not have this hurdle. Second is about range. आज range already 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की चल रही है. तो वो चार्जिंग जो which Gaurav was saying, so this is not even a problem. that 500 किलोमीटर आप एक दिन वो चलाएंगे नहीं. तो all the cars we are coming, so range issue is already taken care. थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज रिचार्ज. कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, आज हम गवर्नमेंट की लिए ही गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखते हैं हर सपोर्ट का. आई थिंक इंडस्ट्री इज नाउ मच बिगर मच स्ट्रॉन्गर टू क्रिएट आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. आज 10,000 डीलरशिप के नेटवर्क हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. BMW के, आई एम श्योर इवन इन वॉल्वो, जितने भी शोरूम्स हैं उन सब के पार्किंग एरिया पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए गए, जो कि ना कि सिर्फ BMW के लिए, एनी कार कैन कम एंड गेट इट चार्ज्ड. आज India is blessed to have 10,000 physical infrastructure showrooms and workshops. Everybody puts one charger. I think the infrastructure issue is sorted. And last but very important, which customers have this thing, resale कैसा होगा. So fourth hour is resale. And that's why most of the companies are getting into buyback. कि आप चलाइए 3 साल बाद 60% वैल्यू पे वापस ले लेंगे. So don't worry about this. So I think as an industry, when we take care of all those issues and concerns, and this whole thing will just bounce back. अनुज, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले शशांक जी से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ. वो ये कि जैसे कि अभी आनंद जी ने कहा कि लग्जरी कार मार्केट का तो क्लियर है, वहाँ पे आइस और इलेक्ट्रिक में दाम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम. देयर आर सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्क EQS द प्राइसेस आर एक्चुअली डाउन इन केस ऑफ AMGs, राइट. सो इन द सेम मैनर क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब मास मार्केट की जो गाड़ियाँ होंगी वो भी आइस और इलेक्ट्रिक एक ही दाम पे मिलेंगी? नहीं, हो सकता है बिल्कुल. वो सब कुछ उस बात पे मशरूत है कि बैटरी की कीमतें किस कदर गिरती हैं. बैटरी की कीमत इस समय अगर आप देखें करीब $150 पर किलोवाट आवर का रेट है. ये एक ज़माना था जब तीन साल पहले इट वाज अज्यूम दैट दिस 150 विल कम डाउन टू $100. बट आप जानते हैं निकल है, कोबाल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट की प्राइसेस हैं, वो दरअसल काफ़ी ऊंचाई उसमें बहुत इजाफा हुआ है.
5 लाख युआन तक गया है ये अभी जो हाल 2 साल में, जो पहले 1 लाख युआन में होता था निकल कार्बोनेट। तो बैटरी की जब तक कीमतें नहीं गिरेंगी तो ये कीमत गिराना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बात बिल्कुल दुरुस्त करी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं वहाँ पे येस इट्स द रेशो ऑफ द ओल्ड द ईवी प्राइस एंड द करस्पॉन्डिंग आइस प्राइस इज क्वाइट क्लोज, 1.2 1.3। ये तो 1.0 की बात कर रहे हैं, क्या फ़ायदा बनाते हैं क्या नुकसान बनाते हैं वो अल्लाह जानता है। और जहाँ तक वो छोटी गाड़ियों का सवाल है, ये रेशो ना थोड़ा ज़्यादा होता है, एक 1.5 1.6 इस कदर होता है। तो इसलिए वो टाइम अभी वक्त काफ़ी लगेगा। और जहाँ तक और मैंने तो पैनल के सभी लोगों का मैंने वो सुना नुक्ते नज़र, लेकिन अगर लेकिन मेरे हिसाब से जो भी अददशुमारी हुई है यहाँ पे वो मुकद्दस तो ज़रूर है लेकिन गुमराह कून भी है। और मैं बताता हूँ वो क्यों। इन्होंने बात करी टीसीओ की। एक्चुअली कितने लोग हैं जो यहाँ पे टीसीओ के बेसिस पे गाड़ियाँ खरीदते हैं? अगर ऐसा होता तो डीजल की तो एक भी गाड़ी हमारे मुल्क में नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि टीसीओ के हिसाब से आप डीजल की जो अभी कीमतें हैं 2-2 लाख का जो फ़र्क है उसमें कभी नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन बिकती हैं। टीसीओ में ये भी होता है कि आप इनिशियल पेमेंट क्या करते हैं। आप मेरे को बोलो आप 10 लाख रुपए की आप कोई घड़ी खरीदो और ये कभी भी हमेशा चार्ज रहेगी, तो मैं तो नहीं खरीदूंगा, मेरे पास 10 लाख की घड़ी खरीदने के लिए नहीं है। तो टीसीओ हमेशा एक वो कोई मेयार नहीं होता है कि जिसके बुनियाद पे जो है कंज्यूमर जो है गाड़ी खरीदता है। इन्होंने बात की 10,000 डीलर्स हैं और एक भी लगा देंगे तो जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो होता है कि फॉर एवरी 10 ईवीज़ एक गाड़ी की ज़रूरत है, एक चार्जर की ज़रूरत है फॉर एवरी 10 ईवीज़। अब 4 मिलियन का अगर अंदाज़ा है, जो 17% अगर जो होता है पेनिट्रेशन, 4 मिलियन ईवीज़ होंगी, उसके लिए आपको 4 लाख चार्जर चाहिए। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो 10,000 लोग 4 लाख लगा देंगे, वो बड़ा मुश्किल है। और तीसरी बात कुछ हमारे साथियों ने कही कि हम खुद चार्ज करते हैं, बाहर भी ये होता है चार्ज होता है। अब वो लोग चार्ज कर सकते हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस खुद की हो, अपने घर में हो, जो घर की चार्जिंग करें। मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, मैं रहता हूँ पहले मंजिल पे। हमारे वसंत कुंज में ये है कि पार्किंग नहीं मिलती। रात में अगर आप आओ 11 बजे 10 बजे तो जहाँ आपको पार्किंग मिलेगी वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो। और मैं तो ये भी करता हूँ कि गाड़ी खड़ी करता हूँ और 100 मीटर दूर जाने के बाद वो टुक बंद करता हूँ, क्योंकि अगर आपने वहाँ खड़े होके उतरते ही बंद किया तो 4 पड़ोसी आ जाते हैं कि भाई तू यहाँ गाड़ी को पार्क कर रहा है। तो ये पार्किंग और मैं आपको असल शुमार बताता हूँ। हमारे मुल्क में सिर्फ 44% घर ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास खुद की रोज़ाना चार्जिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। बाकी जितनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वसंत कुंज भी मिडिल क्लास में ज़रूर हूँ, लेकिन वसंत कुंज में कुछ अपर मिडिल क्लास वाले भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उनके पास वो सुविधा नहीं है। कोई 4थी मंजिल पे रहता है, वो कहाँ से चार्जिंग करेगा? हाँ, वसंत विहार में हो सकता है, वो ज़रूर वो है। और अब तो बड़े बड़े डीलर भी हैं तो उनके पास शायद ये चार्जिंग की फैसिलिटी होगी, लेकिन वो हमारे जो आम आदमी है मुल्क में, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ अगर ये जो गौरव जी ने बताया कि पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से इजाफा होगा ईवीज़ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने जो माहरीन हैं उन्होंने ये बताया है कि ये 17-18% से ज़्यादा 2030 तक नहीं होगा, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो। हाँ, चाहे वो ब्लूमबर्ग कुछ बोलना है तो आप बताएं, और भी मैं अदद शुमारी में मैं और भी तवील और बस। This is a real LitFest happening now. So it is less automotive, more LitFest. शशांक जी, तो देखिए कैफियत तो ये है, ईवी एक टाइम आएगा जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। There will be an inflection point when it will suddenly go up. That inflection point has been seen in China, Europe,
it happens around and in many countries in Europe at 3% penetration, statistically speaking. इसका कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, कोई मंतकी मैं इसमें कोई वो नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन it happens at 3%. That we expect will happen in 24-25, after which it will start climbing up. And गवर्नमेंट सपोर्ट की जहाँ तक बात करी, कई साथियों ने बात करी, बहुत अच्छा है, सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा वक्त तक इसको सपोर्ट, आज ही कल बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया, भाई बजट ख़त्म हो गया। अब वो जो उनका जो भी तिजारती जो इनका वो होता है मुनाफा, और वो उसको पूरा करना उनने। यू कैनॉट हैव अ डेफिसिट फॉर वेरी लॉन्ग। आप जो भी इनका जो फिजिकल डेफिसिट है, और जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे आपको उसका एक नेगेटिव और असर देखने को मिलेगा। वो टू व्हीलर में देखने को मिल रहा है, 65,000 के ऊपर अब जा ही नहीं रही गाड़ियाँ, वो एकदम तेज़ी से 65 तक पूरी जहाँ पे विड्रॉल किया। और बहुत अच्छी बात है, अगर विड्रॉ करेगी गवर्नमेंट तो फिर कहाँ से फिर इतना जल्दी से बढ़ेगा, तो इट इज़ ए प्रॉब्लम एक्चुअली। शशांक सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वसंत कुंज में हाइब्रिड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अनुज, जैसे शशांक जी ने कहा, तो इसका एक ही इलाज है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे अगर ज़्यादा काम किया जाए तो ज़्यादा तेज़ी से एडॉप्शन में शुमारी की जा सकती है। थैंक यू सैम। तो मैं एकदम एग्री करूँगा विद शशांक जी एंड विद द रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट कि पीपीपी इज़ द वे फॉरवर्ड। इनफैक्ट हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, देखिए हर इंडस्ट्री में ना एक रॉक स्टार होता है। अभी तक हमने केवल मोटा मोटा इलेक्ट्रिक कार की बात करी है और थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करी है, पर ईवी इकोसिस्टम का जो रॉक स्टार है ना, वो है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। हम सब शायद रेलेवेंस वो प्रोडक्ट ना रखता हो अनलेस वी आर इनटू सम ई कॉमर्स और सम ट्रेड और सम बिजनेस विच आई एम श्योर वी आर। अगर आप देखें, अगर आप सेल देखें, लास्ट ईयर अराउंड 8 lakhs was the sale, domestic plus export। और अगर आप देखें more than 3.5 lakh electric autos were sold। It's like a whopping 75%। वैसे 47-48% का फिगर चलता है, पर उसमें एक्सपोर्ट भी होता है डिनोमिनेटर में, उसको निकाल अगर आप देंगे तो a whopping 75% of the three-wheeler auto rickshaw sale is electric। It's a big talking point। वो इलेक्ट्रिक क्यों है? अगर आप देखें ई रिक्शा हर जगह में नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसने अपनी जगह खुद बनाई है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं विच वर्क नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिसी बट इवन डिस्पाइट पॉलिसी और इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी, बिकॉज उनको मार्केट एक्सेप्ट करती है। अगर आप देखें ऊबर या ओला का एग्जांपल आप देख लें। ऊबर जब आया था आज से 12-13 साल पहले, हर कंट्री की ट्रेड यूनियन जो थी ड्राइवर्स की, सब ने अपोज किया था। सारी गवर्नमेंट्स ने अपोज किया था कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, बिकॉज गवर्नमेंट्स के लिए वोट बैंक होते हैं ये ड्राइवर्स। सब ने अपोज किया था। क्यों? क्योंकि अगर लंदन में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर 24 पाउंड में जा रही लंदन टैक्सी, वो 7 पाउंड में जा रहा था। बट सारे ऑपोजिशंस बैन्स के बावजूद ऊबर उभर के आया। क्यों उभर के आया? 400 से ज़्यादा शहरों में है। क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर ने कहा मुझे ये चाहिए। तो जब कंज्यूमर कोई चीज़ मांगता है तो कोई भी कंपनी, कोई भी लॉबिंग, कोई भी सरकार नहीं उसको रोक सकती। और देखिए ईवी एक रेवोल्यूशन ऑलरेडी बन गया है। हम एक लिटरेचर फेस्टिवल में ईवी की बात कर रहे हैं। दैट इन इट सेल्फ इज ए टेस्टिमनी। इन द LitFest वी हैव द पेनल्टिमेट पैनल एज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन मोबिलिटी। सो ग्रीन मोबिलिटी केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। अगर आप देखें ग्रीन मोबिलिटी में बहुत कुछ हो रहा है और सरकार से बहुत पुश है। इनफैक्ट हमारे दिल्ली स्टेट के डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ बैठे हैं, अनिल चिकारा जी, जो ईवी पॉलिसी में बहुत बड़ा इनका योगदान है, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब। तो अगर आप ग्रीन मोबिलिटी देखेंगे, ये फ्लेक्स फ्यूल है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, H2IC इंजन की बात हो रही है। अब लॉन्ग हॉल ट्रक्स हैं, उनमें आप ज़्यादा भारी बैटरी नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें H2IC इंजन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स की। इलेक्ट्रिक कार्स में प्रैक्टिकल पॉइंट्स कुछ हैं। आप महंगी से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, उसकी स्टेपनी बूट में पड़ी है, टेल गेट में, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, नीचे बैटरी है। मैंने इतनी महंगी गाड़ी ली पर मेरा जो गाड़ी का स्पेयर टायर है वो डिक्की में है।
अगर मैं इंटरसिटी ट्रैवल करता हूँ, आई हैव लगेज, मैं कहाँ लगेज रखूँगा या रखूँगी? तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमें ओवरकम करने हैं. बैटरी स्वैपिंग अभी एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है इन द करंट केमिस्ट्री लिथियम आयन फॉस्फेट, बट आपको जान के खुशी होगी क्योंकि मल्टीपल केमिस्ट्रीज पे रिसर्च हो रही है. अभी हमने देखा था आईआईटी मद्रास में जिंक एयर पर रिसर्च हो रही है, जिंक एयर बैटरी. जिंक अभी लिथियम के डिपॉजिट्स मिले JNK में, 5.9 मिलियन टन्स. हमारे पास जिंक के डिपॉजिट्स तो कब से हैं, और जिंक का पूरा इकोसिस्टम वेल पेनिट्रेटेड है. और जिंक एयर बैटरी अगर कामयाब हो जाती है, कमर्शियली वाइबल हो जाती है, तो उसमें तो कैसेट डलती है और निकलती है, तो उसमें तो गाड़ी में भी बैटरी स्वैपिंग हो जाएगी पॉसिबल. तो इंडिया एक, एज राइटली मेंशन्ड, एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहां मल्टीपल केमिस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास टॉप साइंटिस्ट हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. अगर ये सवाल 6 साल पहले पूछा होता गवर्नमेंट का सपोर्ट है या नहीं है, तो 6 साल पहले सबने बोला होता नहीं यार कंफ्यूज कर रहे हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि अरे BS4 है, चलो BS5 छोड़ो, BS6 पे चले जाओ. अच्छा ये इलेक्ट्रिक भी कर लो, अच्छा ये साथ में हाइड्रोजन भी कर लो, अच्छा एक काम करते हैं 2030 में बैन ही कर देंगे हम. तो देयर वाज सो मेनी थिंग्स हैपनिंग दैट द कार कंपनी सेड कि बॉस वी आर नॉट अ चैरिटी हाउस, वी आर अ कंपनी फॉर प्रॉफिट. इनफैक्ट इवन चैरिटी नीड्स प्रॉफिट. पर क्योंकि बहुत कुछ एक साथ हो रहा था, तो अब एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर. अगर आप देखें ग्रीन हाइड्रोजन में वी आर टेकिंग द लीड. IOC की कितने प्लांट्स लग रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, और इनफैक्ट मकू साहब से भी डिस्कशन चल रहा था. इनफैक्ट इंडिया की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन ही है ग्रीन हाइड्रोजन और मिथेनॉल है. वी हैव सो मेनी लैंडफिल्स, वो लैंडफिल से मीथेन गैस इट कीप्स एमिनेटिंग इन द एटमॉस्फेयर. तो वो जो बायोगैस है, वो जो उससे आप बायोगैस बनाएं, उससे आप बायो CNG बनाएं, उससे आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं, उससे आप अमोनिया बना लें, वो शिपिंग फ्यूल भी बन सकता है, वो व्हीकल्स का फ्यूल बन सकता है. इस जैसे कहते हैं कि मिट्टी से सोना बनाना, यू मेकिंग वाव फ्रॉम वेस्ट. सो वी आर एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टिपिंग पॉइंट, आई वुड से, वेयर सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल एंड वी हैव द राइट डायरेक्शन. बाय द वे वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. आप देख ही रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या चल रहा है, फ्यूल के प्राइसेस कहाँ पहुंचे हुए हैं. अभी कल ही बात हो रही थी, ब्रह्मा जी कह रहे थे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, उनका जो कॉइन टर्म है. We are at a very strong wicket. This is the need of the hour. If we get our acts right, we can really be at the top, right at the top. Thank you very much, Anuj. Shashank sir, want to add something to it? But before Shashank sir starts ना, गौरव आपने इस बार के ऑटो एक्सपो में हाइड्रोजन सेल भी दिखाया था, हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ी भी दिखाई थी. तो इन सभी चीज़ों का आंसर क्या हाइड्रोजन और इथेनॉल पे बात शशांक सर करेंगे, पर हाइड्रोजन भी क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है फॉर ग्रीन मोबिलिटी? See, I will say that MG as a brand, we stand for auto tech. So right from the first car which came in, एक term जैसे, we heard about ours. The technology in the passenger car segment, at least in the automotive industry, is moving towards in 4 pillars. Just for discussion sake, it is called CASE, CASE. So C is for connected cars. So all the SIM card is in the car itself. So the cars are connected to the and in the future you will see it's called V2V, V2X. So that is part of connected cars. The second is A, which is case ka A. A is autonomous level cars. So you have autonomous level 1, level 2 cars now in the market. हम MG की अगर बोलूँ तो हमारी Aster और Gloucester level 2 level 1 है. Then S is for shared mobility. Anuj talked about how the ride-sharing mobility systems have come up in the country. And E is for electric, right? And that electric actually will be expanded in the future because my change in this whole request, E becomes emissions. How the emissions will change in the future. So it's not just electric, it's hydrogen, it's fuel cell, etc. So CASE is the fundamental on which, at least at MG, we are working on the products to come to the market. And you talked about on the Auto Expo. So Auto Expo, आप लोग में से कुछ ही लोग गए होंगे और शायद कुछ लोगों ने फोटोज़ देखी होंगी क्योंकि दूर था. इन ग्रेटर नोएडा इट्स नॉट वेरी easy to get there and traffic situation will take you 2 hours to reach there also. But we had shown all the portfolio regarding plug-in hybrid, pure electric vehicles and hydrogen fuel cell, and all of them are running. They are not just concept cars. These cars are running in our operations globally. So we see a future which is going to be a very mixed future. So Shang talked about CNG, so there will be a portion of CNG, there will be a portion of electric. You will see hydrogen ICE coming more in commercial vehicles to begin with.
You will again see ICE vehicles. Diesel, petrol will continue for some time. So you see, each and every of these areas will start taking small subsets in the overall ownership cycle. I would say that the need to moving to electric vehicles. I was talking to my mother the other day, and she's in her mid 70s, and she's now talking about, कि I want to end my driving, अब बहुत हो गया. And I was telling her that, the way I see it is that EVs are easy for youngsters, it's easy for middle age and for senior citizens. How? Number one, EVs are automatic, so it's easy to drive. Number two, cost again, Shashank will have a difference in opinion, but I will again reinforce that maths, that अगर मुझे गाड़ी चलानी है 15,000-20,000 किलोमीटर साल का, तो मेरा खर्चा आता है पेट्रोल का अराउंड 1.8 लाख रुपीज़. वही खर्चा अगर मैं EMI में करता हूँ, I can get to an EV ownership. So even if my car is slightly more expensive, my EMI plus petrol cost of an ICE vehicle will be equal to my EMI, let's say, for an EV vehicle. An EV vehicle mein I have ease of mobility. I'm feeling more conscious about the environment also. What future are we giving to our children? What future are we giving to our grandchildren, for example? So there becomes a collective responsibility. And I see a future where 300, 350, 400 के जो रेंज है वो तो हर एक गाड़ी में आजकल हो ही रही है, for example. But this industry will really kick off, like you talked about Rockstar, auto is there. The moment you have daily use के लिए, mobiles में भी जैसे हरदीप ने कहा था that it became a huge trend. So the moment you start talking about a daily battery life, so that is one way of reducing cost, which means that if you're getting a range of even 250 kilometers in a car, and if you see कि मेरी daily need कितनी है, if I'm driving 50 kilometers a day, 70 kilometers a day, it is more than covering my requirements. That then, if you start looking at that concept to make it affordable, bring the battery to a daily use cycle, use that for daily mobility needs, and that is when the era will really blossom even more. And in terms of charging infrastructure, I agree, partly by Shashank also, but I also want to add here that today the way these batteries are made, and even if you are living, even a 16 ampere socket, जो normal हमारा power का socket होता है, even that can also charge the vehicle. So today you are seeing a lot of trends coming in now. Shopping malls are putting up chargers, office complexes are putting up chargers, or even plug points, where they are putting up, if you come and park there, you can charge your vehicle. So there will be a change time, जो कहते हैं ना, there's the change is always a bit more debatable. Yes, no, no, yes. The direction is clear. In different segments, the pace will be different. But I think the responsibility is on all of us. We see value in the economics in maths. We see value in the environment. And we definitely see value in conserving our government's oil pool deficit also, the kind of budget deficit we have. And so the faster we move to cleaner fuels, we'll see a much better trend. So long answer to the Auto Expo, but I must say that we will all take a ownership cycle in this sector. Hardeep sir, talking about value, creating value and thinking about the future of green mobility, do you think it become imperative that it's important to work on other alternative fuels? See, my view on this is that, we talk a lot in terms of how many fuels we want. We are talking about ethanol, we are talking about hydrogen, we are talking about, flex fuels, we are talking about electric. I think if we don't try to focus on one certain direction, which is EV right now, I think we will get lost. I think it has been 5 years that the entire country and all the manufacturers have been working on EVs. And now there is a certain direction on, ethanol, on flex fuel, on hydrogen. I think this is completely, I don't want to use the word, but I think we should stay focused on what we have been doing for last couple of years and make sure that it is a success, right? That one word would be confusing? Yes, you're right. Pretty close, I would say. So I think we should stick to what we have decided a few years back. As I think we've been discussing, it has just been about 0.5% last year. The year gone by is about 1.5%. We are talking about 3% next year and 5% by 2025. So I think still it's a long way to go when we are talking about 30% penetration because China, Norway, the Scandinavian countries have already reached those levels. So if we try to bring in new regulation at this point in time, I don't think we will be able to do justice to any of the fuels.
Shashank sir, would that be a right way to go? Just concentrating on EV and not working on other fuel? Actually, I hold a different viewpoint. नज़रिया हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है और उसकी वजह बताता हूँ मैं. आई वुड रादर एग्री विद अनुज बिकॉज यू नो वी विल हैव मल्टीपल टेक्नोलॉजीज विच विल गो फॉर द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अब अगर आप बात करें इन्होंने एनवायरनमेंट की भी एक बात करी, कॉस्ट के बाद एक एनवायरनमेंट की. एनवायरनमेंट में ईवीज़ के मुतल्लिक अगर बात करें तो उधर टैंक टू व्हील तो ईवीज़ में जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता है. लेकिन अगर आप वेल टू व्हील की बात करें कि जब आप प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कितना एमिशन हुआ एनवायरनमेंट में. एट द मोमेंट in India it is worse than fossil fuels. So environment को लेके अगर आप सोच रहे हैं कि EVs में contribution कर रहे हैं तो वो इस समय गलत है. और EVs के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो है cradle to grave. बैटरी को एक बार जब ख़त्म होती है तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप सिर्फ फेंक नहीं सकते. So you will, if you look at cradle to grave, EVs are even more polluting. So अगर ये environment की बात करें वो जब तक नहीं होगा जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एक रिन्यूएबल उससे ना करें. यानी कि या तो हम विंड, सोलर या न्यूक्लियर इससे करेंगे तो वो क्लीन रहेगा. नहीं तो सिर्फ ये होगा कि जो शहरों में जो आलूदगी है, जो पॉल्यूशन है, फ़िज़ाई पॉल्यूशन जिसको फ़िज़ाई आलूदगी बोलते हैं, जो एयर पॉल्यूशन है, इट विल शिफ्ट टू प्लेसेस वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो आप शहर में तो खाली कर देंगे अपना अच्छा कर लेंगे, बट व्हाट हैपन्स टू द प्लेसेस वेयर यू विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल से प्रोड्यूस होती है. हमारे मुल्क में तो सबसे ज़्यादा करीब 50% जो है बिजली वो उससे प्रोड्यूस होती है. तो हमें एक ग्रेडेड स्टेप्स लेने पड़ेंगे. और बाय द वे आई कैन टेल यू सम स्टैटिस्टिक्स विच माइट इंटरेस्ट यू. आज से लेके 2030 तक लगभग 43 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स विल बी सोल्ड इन आवर कंट्री. आज से 2030 तक उसमें से 4 मिलियन इलेक्ट्रिक होंगी. गौरव जी ने बोला 17 कम है, ब्लूमबर्ग बोलता है 17% है, IHS बोलता है 17% है, बट चलिए वो हो सकता है 20 भी हो सकता है, किसी को नहीं पता. तो अगर 20 भी मानते हैं और 43 मिलियन कार्स में 8 मिलियन भी अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो 35 मिलियन विल बी आइस व्हीकल्स. व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बिकॉज दे विल डेफिनेटली पोल्यूट द एनवायरनमेंट. You need to improve the fuel efficiency and bring down the pollution of these 35 million. 8 का तो आप संभाल लेंगे, बट 35 मिलियन का क्या करेंगे. 35 मिलियन में आपको ऐसे चाहिए जहाँ पे CNG है जैसे, या जैसे हाइड्रोजन की बात हुई या इथेनॉल की बात हुई. और यही वजह है कि हमारी हुकूमतें भी उसी समत में जा रही हैं. They are going in that direction because of this. You have to have technologically agnostic direction for solving the environment problem. नहीं तो अगर आप सिर्फ ये बोल के कि EVs are less polluting, you cannot, you will go in the wrong direction. और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि हमें एक ही डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए. और मुझे तो खुशी है अगर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाएं और मार्केट शेयर बढ़ता जाए. नहीं वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं तो मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ. लेकिन अगर वो गुमराह हो के कोई एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो गुमशुदा भी कहला सकते हैं. और हो सकता है कुछ लोग मुल्क छोड़ के भी चले जाते हैं जैसे पिछले कुछ सालों में हुआ है. लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखनी, हमें तो देखना वेदर व्हाट इज़ कि हमारे मुस्तकबिल में क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे इंडस्ट्री के लिए, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुस्तकिम है, मतलब स्टेबिलिटी कहाँ पे है. वेयर इज़ दैट स्टेबिलिटी, फॉर व्हाट सिस्टम विल गिव अस दैट स्टेबिलिटी. और अभी तो बायोगैस पे भी चर्चा हो रही है, इसीलिए गुगलानी से अनुज जी से मैं एग्री कर रहा था क्योंकि इन्होंने बोला बायोगैस की भी जिक्र किया. अब बायोगैस में क्या होता है आप सब जानते हैं, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं.
आपने सुना होगा कि हमने एक करीब सुजुकी ने उसमें काफ़ी निवेश किया है, सरमाया हुआ है यहाँ पे गुजरात के सूबे में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि बायोगैस कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर रनिंग। नहीं तो जो गाय गोबर देती है, अब मैं थोड़ा सा रफ उसमें अंदाज में बोलूँगा, गाय तो गोबर देती है, वो एक गाय लगभग 15 किलो गोबर देती है, ठीक है। अब 15 किलो गोबर अगर आप ऐसे 10 गाय इकट्ठा कर लें तो 150 किलो गोबर होता है, उससे आपको 3 किलो गैस बायोगैस बनती है। 3 किलो बायोगैस से आप एक गाड़ी चला सकते हो, और बल्कि एवरेज अगर लें तो 2 गाड़ी चला सकते हो। सो 10 गाय का गोबर इक्वल्स 2 व्हीकल रनिंग, एंड इट सेव्स यू ऑन दी, जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं ना, GHG, जो मीथेन वगैरह जो हवा में चली जाती हैं। तो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं गुजरात में, गांव वालों से गोबर खरीद के उस पर बायोगैस का प्लांट लगा के उससे गाड़ी चलेगी, उससे गांव वाले भी खुश हैं, उनको भी एक जरिया मिल जाता है कुछ ज़्यादा अर्न करने का, और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी, बिकॉज यू डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनीथिंग। गाय तो हमारी बहुत सारी हैं, एक्चुअली हमने कैलकुलेशन ये भी किया कि हमारे यहाँ पे 400 मिलियन गाय हैं। 400 मिलियन गाय का मतलब 40 मिलियन गाड़ियां दौड़ सकती हैं उनके गोबर पे। और अभी ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि गाय की जब दाम लगता है तो वो बोलते हैं भाई ये दूध कितना देती है, अब आगे से ये भी होगा कि ये गोबर कितना देती है। इसलिए इट इज विल बी हैव मेनी टेक्नोलॉजी विल रन। या थैंक यू। इसी में एक मैं लास्ट ऐड करना चाहूँगा, जो शशांक जी ने जो बोला कि एक सस्टेनेबिलिटी पूरी कॉर्पोरेट की देखनी पड़ेगी, और ख़ासतौर पर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल, आज आप एक लेदर यूज़ करते हैं सीड के लिए, उसकी टेनरी की वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है वो कहीं भी काउंट नहीं हो रहा, तो हम सिर्फ CO2 को एमिशंस पे देख रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल कंपनीज़ को एक हॉलिस्टिक अप्रोच, क्या मटेरियल जा रहा है, क्या वेंडर क्या प्रोसेस है, और क्या रिसाइकलेबल हो रहा है, मेरे ये पुरानी 10 साल 15 साल के बाद गाड़ी कितना मैं उसको रिसाइकिल कर पा रहा हूँ। ज्योति सर, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। फाइनल कमेंट्स ऑन द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सी आई थिंक एक चीज़ जो शशांक जी ने कही, इंडिया में हमारे को मल्टीपल सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन होने वाला है। अलग अलग सेगमेंट को, अलग अलग कंपनीज़ को, अलग अलग मतलब सेगमेंट्स को अलग सोल्यूशन लाने पड़ेंगे। तो पहली बात यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमने बात करी, इंडिया में प्रोडक्शन की थर्मल पावर, यस आई थिंक आज इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 175 किलो गीगावाट है, जो 42% है। बट गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर बोला अगले 500 गीगावाट जो आने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाले हैं। तो सडनली थिंग्स विल चेंज। समटाइम दिस आर द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। हमारे यहाँ जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, जो नए हाईवेज आने वाले हैं, हमारे पास थे नहीं। अब जब आएंगे दे विल बी EV रेडी, वहाँ पर लगेंगे, चार्जर्स भी लग के आएंगे। हर रोज़ गडकरी साहब रोज़ बोलते हैं कि 2 घंटे में यहाँ से जयपुर, 2 घंटे में यहाँ से, तो सब में लग रहे हैं। आई थिंक इट्स रियलिटी। 2 घंटे में नहीं पहुँचेंगे, जैसे 3 घंटे में पहुँचेंगे, 2 साल में नहीं बनेंगे, लेकिन 3 साल में बनेंगे, लेकिन बनेंगे। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, ये तो निश्चित है। अब किस सेगमेंट में, किस कंपनी को, किस पर्टिकुलर फ्यूल के पीछे जाना है, बट ग्रीन मोबिलिटी तो चाहिए हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के रोज़ बात होती है, अब एक रियलिटी है। जिस तरह का हम रोज़ देख रहे हैं, मतलब इंडिया दिल्ली में मौसम देखो, कभी समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मी है कि स्प्रिंग है, हम कहाँ से कहाँ जंप कर गए। सो आई थिंक इट इज़ अ रियलिटी वी हैव टू ऑल एड्रेस। आई थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल, and I think each one of us to go back and see what is the best solution we can come out with to take care of environment and sustainability. That's all I would say. Anuj, final comments? Yeah, so I agree with what Jyoti just mentioned. We need multiple solutions. And when it comes to biogas, Shashank ji, I am personally very excited on this, topic. And adding to that, जब हम ethanol की बात करते हैं, हम सब जानते हैं इथेनॉल किससे बनता है। इथेनॉल जो बनता है, मतलब एक तरफ हमारे जो फार्मर्स हैं, वी हैव अराउंड 40% पीपल हु आर स्टिल बिजी विद एग्रीकल्चर एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 18% टू द GDP। तो फार्मर सुसाइड्स इज़ अ रियलिटी। हर साल में ये सब दुखद खबरें सुनने को मिलती हैं। फार्मर्स एजिटेशन कितना हुआ, मतलब बड़ी से बड़ी सरकारें हिल गई, दे हैड टू रिवोक द बिल्स। ये जो हमारा इथेनॉल है, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमने प्रीपोन कर दी, इंडिया एनर्जी वीक जो बेंगलोर में हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनवेल किया इथेनॉल 20 फ्यूल E20।
and it's been rolled out in 12 cities. Very soon it will be in double the number of cities. Ethanol बनता है molasses से, और जो crops खराब हो जाती हैं जैसे wheat हो गया, rice हो गया, खराब हो गई, which are unfit for human consumption. फार्मर के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है, वो अपने सर पे मारता मैं क्या करूं इसका. वही चीज़ से इथेनॉल बनता है, वही हमारे पेट्रोल में एडिटिव होता है. इससे बढ़िया क्या हो सकता है. हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहा है. द बिगेस्ट इम्पोर्ट बिल वी हैव इज़ ऑफ क्रूड. वो हमारा नीचे हो रहा है. हमारे फार्मर्स भी खुश हैं, हमारे शहरों की हवा भी साफ़ हो रही है, एमिशंस कम हो रहे हैं, और हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं. इट्स अ विन 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 अपॉर्चुनिटी. अभी हमारे यहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स पाए गए हैं JNK में, रियाजा डिस्ट्रिक्ट में, 5.9 मिलियन टन्स. इट्स वॉपिंग. बट उसमें भी वी हैव टू बी केयरफुल. हम कैसे माइनिंग करेंगे. लिथियम एक्सट्रैक्शन माइनिंग इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. The amount of resources it requires. 1 ton of lithium needs 2.2 million liters of water to mine. अभी हमारे बैंगलोर में, कर्नाटका के बैंगलोर के पास डिपॉजिट्स पाए गए थे कुछ हज़ारों टन के. वो उस तक की अब तक एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हो पाई है. That entire zone, it's in Himalayas जहाँ पे पाए गए हैं. It's a very sensitive ecosystem. So there are many things we need to focus on. But things like ethanol, methanol, flex fuel, biogas, bio-CNG, आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा अखबार में, जितनी भी ये जहाँ पे कैटल को काटा जाता है फॉर मीट और whatever reasons, काटना बंद हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि that cow dung or the buffalo dung is more precious now. Right. That's a more viable business proposition. So things are changing, and they're changing for the better. This is a topic that Anuj we can keep on talking, and the whole nation also want to decode this electric mobility. वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है. जाने से पहले आप सभी का बेहद शुक्रिया. Can I just give one comment to all the members in the audience and to the Vasant Vihar club members? I am not using it for a sell opportunity, but I only say that in discussion and forum is a lot of learning, because we learn so much about that we all have learned here. I only will say that as whatever is in our control as individuals, we should try and do our step. What we can do, because if we start looking at the entire, the bigger player system, ecosystem, we may not be able to take the right steps. So my request to all of you would be that in whatever way you can, turn towards green, whether it's in home life or in your transportation needs or cars or whatever. That will be one big step. So do what you can in your own request. And I think to the club members, we are happy to put up a charger in Vasant Vihar club, wherein members, when they come here for Tombola or for cards session and spend some time, at least they will start visualizing it there itself. Fantastic. What exciting and okay. But as we said, this is a literature festival, sir, and without talking about literature, saying goodbye won't be a right thing. Shashank sir has promised that वो बहुत जल्दी उर्दू में एक किताब लिखने वाले हैं. मैंने तो ऐसा कोई जिक्र किया नहीं. लेकिन अनुज एक लिख चुके हैं, और अनुज ने जो है 80-90s के ऊपर एक बहुत उम्दा किताब लिख दी है, और द नेम इज ओए होए. Right, Anuj will act to that book that he has written. But before we conclude, if I could ask to play a small clip on the upcoming Oye Hoye. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन. गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन. ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. Now that's what I call a very, very interesting and enlightening discussion, and I'm sure we thoroughly enjoyed it. We can go on, and we'll have some time for question answers, very short time. But before that, can I request everybody to join their hands and give them a big round of applause.
Come on. Thank you very much, all the panelists. We'll have some short time. I know we are running out of time for question answers. So we can take some questions. Okay, please. Yeah. It's a common it's a, Mic दीजिए वहाँ पे. it's my observation that I want to know how much time does it take to get a full charge on the battery. Here, where is the mic? So it's a function of the battery size and also the battery chemistry. But roughly I can tell you that in the ZS EV that we have for MG, it's a 50.3 kilowatt battery, and using a fast charging in about 50 minutes, you can actually reach up to 80% of the battery charge. One thing I also want to add here from an education perspective, or rather not education, it sounds preaching, but like in a petrol and diesel, you are never empty when you go to a petrol pump. You're always at least 1/3 or kuch to rehta hi hai. So similarly in an EV battery also, very rarely are you completely juiced out. So use that as a barometer for your charging. And if you do the slow charging, in Vasant Vihar, let's say you are living in a bungalow here, you can put up an AC fast charger, 7.5 kilowatt lag sakta hai. In that case, it will take about 4 to 6 hours also, which is a good 11 p.m. to 6 a.m. Right? And if you don't even get that, and you're having a simple power socket, 15-16 amperes, it will take about good 14 to 15 hours. But if you are totally empty on battery power, which is not the case normally, we also see that in the future you will have, I'm visualizing that since the Delhi government representative, Minister, you are also here, that maybe you're talking about happy hours of charging battery also. That at the back end, you're saying that if you charge the battery between midnight to 6 a.m., you get some special rates. So all these things will also drive behavior change in when you charge the car also. Sir, subsequent question. On a highway, a full tank takes 5 minutes to get a refill in a petrol car, and in an electric car it takes 20 minutes. So there's likely to be a tailback. So I want to add here, and a good point, but typically what happens is if you're taking a journey, let's say Delhi to Jaipur, a 4-hour, 5-hour journey, you will like to stop after 2 hours for at least a refreshment break. 15-20 minutes के लिए आप रुकेंगे वहाँ पे, right? You may have a cup of tea or whatever. So usually the way you see this is, like I had said, if the range is like in our case it's 461 kilometers, after 2 hours of driving also, when you stop for 20 minutes, you are again juiced up on the battery. So you're actually utilizing your waiting time. You're not going to a petrol pump out of the way just to fill up your gas in the car. You are actually using your refreshment time to charge your vehicle. So your net saving actually is additional. अगर नहीं तो आपको 10 मिनट लगेंगे चार्जिंग में, पेट्रोल भरने में, लाइन में लगोगे आप, फिर आप 20 मिनट रुकोगे चाय पानी के लिए, तो आधा घंटा हो गया. वही आधा घंटा या 20 मिनट आप रुको एक ही जगह पे, वहाँ पे टी ब्रेक भी है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक भी है, एंड चार्जिंग भी है. So see in that perspective. Please, the gentleman there. See, we'll have some others also. Okay, last you can say. How do you plan to scrap the old vehicles? I think let's collect the questions and then take them in one go. That for the paucity of time. We'll have just time for the gentleman there, please. Either third row. Yeah, don't forget the lady, Anjali ma'am. Yeah, please. And then after that, the gentleman there. My question is regarding the dependence of the auto industry and maybe perhaps also the EV vehicles on China. How much are we dependent on China, and what are our plans to reduce that dependence? I'm aware that some companies are doing it. Hero, for example. I don't know about the gentleman sitting here. I'm aware that a rep of MG is also here. The question is what is dependence. So what's the question? No, dependence on See, China. dependence He on... wants to know about dependence on China. See, I think it's a question which is a much larger sphere of discussion, because today the battery technology is not just to one country, but a few countries in the world.
And I think the direction of looking at advanced cell chemistry production in the country is the way that we are looking at developing our in-house capabilities. So all these things are the actions that we are looking at leveraging our own strengths and in terms of also getting more competitive in the world. Okay, gentlemen in the third row, yeah, please. Just to add to this point, अभी भारतीय सरकार ने production link incentive policy निकाला था, and in that policy there are $2 billion which are getting invested by 2027. So there's a lot of work which is going to happen in the battery technology. So you can see a lot of self-reliance so far as battery is concerned in the next 5 years. So when you start selling the battery cars in millions, the electric load growth will be in the order of gigawatts. And that gigawatts you have to, like you rightly said, generate at remote places. So the pollution is not there in the cities, pollution is somewhere else. But you have to develop transmission lines to transport that gigawatts. You have to develop distribution systems to transport that gigawatts. The gentleman was saying when you go to Jaipur, रास्ते में refreshment के लिए रुकेंगे. There is a Haldiram. It is not 1 or 2 chargers which will help you. I'm an electrical engineer. 60 kilowatt charger charges your car in 1 to 2 hours. 2 hours, about 80%. Now you will have to have battery of chargers. As a matter of fact, you have to have parking lots which are full of chargers of 200 battery, 200 cars, 400 cars, like you see in the Western countries. And it is not such a simple game. Absolutely. But before that, people are working on the fuel cells, nuclear fuel cells or hydrogen fuel cells. Maybe some development will come in that area also. I think it's a great point that you make, because it is not going to be one charger or 2 chargers in a place. तो वो ठीक है कि आप ब्रेक ले रहे हैं और वहाँ पे आप चाय पी के लिए रुक रहे हैं तो आपने चार्जिंग कर ली, बट इतनी जल्दी चार्जिंग होने वाली नहीं है. क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप सोचें, अगर 7.5 किलोवाट आवर का अगर आपने चार्जर लगाया है और 50 किलोवाट की बैटरी, तो 6-7 घंटे लगेंगे. तो अगर फास्ट चार्जर लगाएंगे तो फास्ट चार्जर की कीमत करीब 13 से 15 लाख होती है. तो वो अब लाखों में नहीं होती है. वो लाखों चार्जर अगर होंगे उसमें 3/4 तो आपके स्लो चार्जर होंगे. तो एक वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो रेस किया. आपने बोला चाइना पे क्या डिपेंडेंस है. PLI की स्कीम जो है बैटरी से मुतल्लिक है, लेकिन अगर आप सेल की टेक्नोलॉजी की बात की, उसके जो बेसिक मटेरियल हैं वो तो भाई बाहर से ही आते हैं, चाहे वो निकल हो, कोबाल्ट हो या लिथियम हो. उसके कुछ ही कंट्रीज़ हैं, चाइना सबसे बड़ा है, जहाँ पे ये आते हैं. और ये बात जो इन्होंने फरमाई उस पर काफ़ी विचार हो रहा है हमारे गवर्नमेंट में कि किस तरह इसको ओवरकम करें. तीसरी बात जो मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपको कि हमें एक चार्जर से काम नहीं चलेगा. तो जैसे इन्होंने बोला चाय पीने के लिए रुके तो आपने चार्ज दिया, लेकिन कई लोग रुकेंगे चाय पीने के लिए, तो एक बंदा तो चाय पी के निकल जाएगा. लेकिन अगर बाकी वो चाहेंगे तो उनको चाय के साथ, अगर वो सुबह गए हैं तो सुबह की चाय, फिर दोपहर का खाना और शाम का खाना, और शायद नींद भी पूरी करके अगले दिन जाना पड़ेगा. I am getting reminded. I think we'll have to take just one more question and okay. Can I add one more thing? इंडिया एक हमारे मुल्क में एक और समस्या है जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि उस पर भी तवज्जो फरमाएं. वो ये कि अगर आप चार्जर लगाते हैं, जैसे आपने क्लब के बाहर लगा दिया, मुझे यकीन है कि वहाँ पे कोई ना कोई ठेले वाला ज़रूर आएगा. और वो जब आप जाओगे तो या तो गाड़ी पार्क होगी किसी और की, या आपको वहाँ पे वो है. और ये हमने देखा है, कुछ बॉम्बे में हमने रिसर्च करी, उसमें हमने देखा वहाँ गए, वहाँ पे बंदा अपना वो बेच रहा है, वो कपड़े वगैरह लगा के, कुछ बगल में लहसुन प्याज वगैरह भी बिक रहा है. तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, इसलिए ना जब तक ये बहुत सारे हमारे पास चार्जर नहीं होंगे, ये समस्या तो रहेगी. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तब आप देखेंगे कि तेजी से. सो द क्वेश्चन इज नॉट वेदर EVs विल बिकम मेन स्ट्रीम. देयर इज ए कंसेंसस इट विल बिकम मेन स्ट्रीम, but the question is when it will become mainstream. I can see so much of excitement, both in terms of questions and answers, but we are running short of time, and the president is warning me again and again. So I better stop now. Maybe a last question we can take, ma'am, here.
And that's it. Good afternoon. Thank you very much for the discussion. As an introduction, I work for Jaguar Land Rover, the global head of new mobility, which is CASE, as you mentioned. Previously, I've had the pleasure or the headache of launching the world's first mass market EV, the Nissan Leaf, in the UK. So this question comes with some background knowledge, and so I want to hear the Indian context of this question. There's one point I want to make before I ask the question. I think Shashank ji mentioned that electricity production, all we're solving with EVs is increasing the air quality in the cities, but passing on the problem somewhere else. I actually don't buy that argument, because what we're doing is we're centralizing the problem of energy production. Whereas in internal combustion engine cars, we are localizing the issue of combustion. Imagine if your phones all ran on petrol, that's the situation. Why should our cars run on gasoline, right? So I don't buy the argument of central versus local. The other thing is, I have a question on the multiple fuels argument that you raised. In terms of the fuel choices and the various energy choices that we have amongst, today, we're lucky to have. The question is for the OEMs. If we don't focus on any single or one or two different energy sources or energy types or mobility types, how will the OEMs solve the entire supply chain issue and the infrastructure required for this kind of multiple energies? Because you need economies of scale to run any kind of end-to-end energy production and delivery and charging and refueling. If you have too many choices, how will OEMs resolve the whole problem of too many choices, and where do you put the resources, where do you put the investment? Yeah, so thank you for that question, and in fact we respect your perspective. आपके जो नुक्ते नज़र है उसका एहतराम है, लेकिन आपको ये बता दूं कि what we had said was not centralized versus dispersed production of electricity. It is the resource required for producing it. So if you use dirty coal, whether you use it here or at a centralized place, wherever you use it will be dirty, whether centralized or not. So the question was not about centralized versus dispersed, but about the resource used for so. Thank you for that question anyway. And when you talked about CASE, and I'm glad that you, I think, worked in UK probably, and CASE is there. Like CASE, as he explained, there is an autonomous where a car goes on itself and it's programmed, etc. It's a little far off in our country is what I believe. Because जैसे अगर आप महिपालपुर से कभी गए हों, यहाँ से गुड़गांव महिपालपुर से, तो जितने लोग, जैसे एक वन वे ट्रैफिक है, तो जितने लोग उधर जा रहे हैं उतने लोग उल्टे भी आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आते हैं. तो आपको लगता है कि ये हम सही रास्ते पे हैं क्या, या ये गलत रास्ते पे हैं, या ये सही रास्ते पे हैं? बिकॉज पीपल आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. आई कैन टेल यू, नो सॉफ्टवेयर in the world can program for such things where people are just coming from the opposite. It happens in our country all the time, as you would have said. या आप हमारे गाय देख लें या बाकी जो जानवर वगैरह वो भी है. हाँ, तो वो ऑटोनॉमस जो, हाँ, तो उसमें प्रोग्राम करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा. तो जो वहाँ की जो हालात है यूके की शायद मुख्तलिफ है और हमारे लिए शायद अलग होगी. और जहाँ तक सप्लाई चेन का वो है, आई विल टेल यू, सप्लाई चेन विल हैपन. We will have electricity production. We will have, as he said, renewables giving us electricity. It is only when the demand becomes large, it will automatically get. In fact, when the cars was introduced 100 years back, more than 100 years back, OEMs did not think about petrol pumps. They came up, the energy people, they put their petrol pumps when the demand came. So that is going to happen here also. So please don't get me wrong. I feel it will happen, but it will happen with some lag of time. This is very exciting. I see there have been questions, and we can go on. Sorry, I just want to add to what you said. Now that is going to be the last one. Yeah, the last one for sure. First of all, thank you, and I completely agree to what you just mentioned. And as we can see, Shashank ji and us, we are not agreeing on each and every point, but I completely agree to your point that yes, when the government took a step of electrifying this country, there was some thought which went behind that where is the electricity going to be produced? Yes, coal is one of them, but on the whole, the carbon footprints are reducing as we are going towards the electrification. So thank you for bringing up that point. And the second point, exactly I mentioned earlier, we can't digress into too many powertrains, too many engines, because
it's a completely, then you are not focusing on something and not getting economies of scale, and also supply chain is a big issue. So while, we have opposite views, but I completely agree to what you just mentioned. Thank you. Bottom line, conversation leads to commerce. So get onto the EV bandwagon. Wow, that's lovely. So, this can go on, and I'm so excited to see both the audience and the panelists answering, and that can go on and on. I have So one question from behind, very quick one. When are the OEMs launching mass market EVs? Cheaper EVs and mass market EVs. So, non-luxury segment. Yeah, at Kia we will be launching in 2025. We already have the EV6 which we launched, which is obviously in the luxury range. But let me tell you, we got a tremendous response. We were planning to sell 100 cars a year. We sold almost 400 plus in 3 months. So the response is fantastic. But at Kia we'll be launching. So thank you very much. Now can I request my friend and colleague? If you want to buy something earlier, wait for just 2 more months. You will get a 10 to 15 lakh rupee EV with a daily battery charge, and that will be a mass market EV. Not cheap, but very stylish, urban mobility, smart electric vehicle. Oh my God! I think even a day is less for this kind of discussion. So can I request my colleague and friend Rajinder Magu to come and give the mementos? I think we should have kept at least hour and a half for this session, but we did keep just an hour. And we've had to wrap it up really quickly because it will take about half an hour for the stage to be set up for the dance. So as soon as this session gets over, we'll take about half an hour for the stage to get set up before the performance starts. So please don't leave. If you want, you can have some tea and coffee at the back. There are some cold drinks being sold at the back as well. See you in half an hour.